I promise I'm not going to say social media. I know you people already probably know that, and I don't want to waste your time. But there is a very interesting concept that I saw in a video, or maybe मैंने book में पढ़ा था, that our brain is much more hardwired at finding problems than it is at finding solutions. How interesting is that? So if we find the best possible ways to ruin our lives, obviously the title is sarcastic, but if we find the best ways to ruin our lives, then by flipping them around, we now have a list of things to never do in order to ensure that we don't accidentally ruin our lives. Wait until the end of this video if you want me to give you a list of things to do that will ensure that you probably don't ruin your life accidentally and that you have a successful and great life. So if that sounds interesting, keep watching. Number one thing, if you want to absolutely make your life a living hell, if you want to completely ruin it, by all means, is hate your parents. Best, like ideal way. This is what I would recommend to a person if he comes to me and says, Akshath, I want to ruin my life. Hate your parents. Every single day, talk, like, bitch about them to your friends and just hate them in every single way. I used to have this girlfriend. We were in love. And my parents didn't like the fact that I was spending so much time with that girl. And in response to that, they started to be a little stricter with me. Basically, they would yell at me for being on my phone for long periods of time, and they would just, now that in retrospect, like when I think about all the things that I used to do and the way my parents reacted, it was justified. As a parent, when you look at your son doing something pathetic, you call him out, right? That's what I would do. And still, in my opinion, my parents handled it very well. But because of that, I started to hate my parents. Obviously, I was a teenage dumb child. Started to hate my parents. And my life was ruined successfully. So if that's something that you want to do, by all means do that. I unfortunately didn't want to ruin my life. So instead, what I opted for was fixing my relationship with my parents, and now we love each other to death. We would die for each other, and it's absolutely wonderful, beautiful life. But if you want to ruin your life, hate your parents. Absolutely excellent way. Number 2, so this is in no order. So this is like the best ways that I could think of. They're in no order whatsoever, right? The second best way to ruin your life, to ensure that your life is ruined, is believe that the education system is made for you and that it's going to support you, help you, etc. I unfortunately was not a victim of this, or not victim. I was not able to take advantage of this set of belief. So I accidentally didn't ruin my life because of not believing in this. You can choose to if you want to ruin your life, absolutely. 12th तक education system पर पूरा भरोसा रखो and 12th graduate करो. उसके बाद फिर कॉलेज में जाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ कोर्स. इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद पोस्ट ग्रेजुएट करो, मास्टर्स कर लो, MBA कर लो. इंजीनियरिंग के बाद MBA कर लो, डजंट रियली मैटर. एंड उसके बाद तुम्हारे पापा का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें तुम एक छोटा मोटा पोस्ट कर लेना. ये होता है एजुकेशन सिस्टम. एंड अगर तुम्हें अपनी लाइफ बर्बाद करनी है, ज़िंदगी बर्बाद करनी है, तो इसके अलावा मैं और कुछ तुम्हें एडवाइस दे नहीं सकता. यू बिकम अ पार्ट ऑफ अ मशीन, जिसमें एक साइड पे तुम ब्लैंक स्लेट पे बच्चे डालते हो और दूसरी साइड में कंप्लेन ना करने वाले मर्द निकलते हैं बड़े बड़े, जो कि अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे, लेकिन सिर्फ तब तक करेंगे जब तक तुम उनको पैसे देते रहोगे. और ये पैसे बढ़ाने को भी नहीं बोलेंगे, प्रमोशन के लिए भी नहीं बोलेंगे, राइट? दिस इज़ द मशीन दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन व्हेन यू गेट इनसाइड द एजुकेशन सिस्टम. और 12th तक तो मजबूरी है, 12th तक तो करना ही पड़ेगा. एंड मोस्ट लाइकली 12th तो तुमने कर लिया है, अब तुम नेक्स्ट स्टेज पे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, राइट? Congratulations. You might already be on your way to ruin your life. So excellent. The third best way of ruining your life, destroying your life absolutely, is be an atheist. और मैं इसका शिकार रह चुका हूँ. I'll stop talking sarcastically, it's getting a little annoying. तो मैं इसका शिकार रह चुका हूँ. There was a time when I used to believe कि we are alone in this universe and our existing on this planet is completely like by chance. मैं ये सारी चीज़ें believe करता था and I used to think I was very cool. But then a lot of things happened, and now that I am a grown man, I actually believe in God. I actually respect God. I do not pray and do not ask for a lot of things. I just thank God every single day for things that I already have. मुझे लगता है ये relationship बहुत healthy relationship है and I think it's very beautiful. मैं किसी का बिलीव्स चैलेंज नहीं करना चाहता, मैं किसी के बिलीव्स के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता. मैं नहीं चाहता कि मेरे बोलने से तुम भगवान पे विश्वास करने लगो. इफ़ यू डू ऑलरेडी ऑसम, इफ़ यू डोंट लाइक डजंट बॉदर मी. तो इस टॉपिक के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा. नंबर 4 बेस्ट वे टू रूइन योर लाइफ इज स्टे कंफर्टेबल. जब सुबह अलार्म बजे तो उसको स्नूज मत करो,
बंद कर दो और वापस ब्लैंकेट में घुस जाओ। जब शाम को जिम जाने का टाइम हुए तो उस दिन जिम मत जाओ। जब कुछ बाहर जाओ जब तुम बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते हो तो जब भी कुछ खाने को मिले तो सब कुछ खा लो। जब भी कुछ हार्ड वर्क करने का टाइम आए तो मत करना, हर चीज़ कल करना। बेस्ट वे आउट बाय फार अब तक की जो भी मैंने तुम्हें चीज़ें बताई हैं 2-4, उनमें से सबसे बेस्ट तरीका है इफ़ यू वांट टू कंप्लीटली annihilate योर लाइफ, यू वांट टू इंश्योर यू नेवर सक्सीड, नेवर बिकम एनीवन स्पेशल, ये चीज़ ज़रूर करना। excellent वे। नंबर 5, द लास्ट मेथड दैट आई कुड थिंक ऑफ जिससे तुम अपनी लाइफ पूरी तरीके से रूइन कर सकते हो इज़ नेवर वर्कआउट एंड स्टे आउट ऑफ शेप। अगर तुम मोटे हो तो मोटे रहो, पतले हो तो पतले रहो, एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हेल्दी खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिम जाने का सोचना भी, and your life is ruined. Cool. So everybody that wanted to ruin their life probably already know all the information that they probably need. अगर कोई ऐसा भी देख रहा है जिसको अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है तो you probably already know ये सारी चीज़ें मत करना। मेरी एडवाइस तुम्हें होगी एज अ बड़े भैया, ये चीज़ें बिल्कुल मत करना। इनके अपोजिट मैं तुम्हें बता देता हूँ जो कि तुम्हें let's flip them around, right? The thing I said before, let's flip them around and figure out the things that you probably absolutely should be doing if you want to make sure that your life goes in the successful direction instead of a downward spiral. Cool. Number 1 thing is love and respect your parents. Think about, this is what my motivation is, right? I want to give my parents everything. I don't have a lot of shocks. I don't care about cars. I don't care about money. I don't care about watches. I don't have any vices even. I don't drink. I don't smoke. I don't do anything. I don't need the money for myself. I want it for my parents. I want to retire my mother, retire my father, make sure that they have everything that they couldn't have because they had me and because they started off as a middle class family. That is my motivation. तुम्हारी motivation भी यही होनी चाहिए. Number 1, love and respect your parents. Number 2 is assume that the education system is planning to sabotage you. सोच के देखो कि this is a fact. मैं ये चीज़ें बना नहीं रहा हूँ. Starting में तुम एक छोटे से बच्चे को डालते हो जिसके पास कोई अपने खुद के बिलीफ सिस्टम नहीं है, अपने खुद के कोई ओपिनियंस नहीं है, और तुम उसे एक मशीन में एक साइड में डाल देते हो एंड 10-15 साल बाद एक बड़ा सा हट्टा कट्टा लड़का निकलता है जो कभी कंप्लेन नहीं करेगा कि ये सिस्टम क्यों बनाया गया, ये क्यों करा, वो क्यों करा, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये सारे क्वेश्चंस पूछना उसके सिस्टम के अंदर से ही निकाल दिया गया, मैनिपुलेट करके, उसकी कंडीशनिंग करके, उसके अंदर से ये नेचर ही उसका बदल दिया गया है कि वो अब ये सारी चीज़ें क्वेश्चन ही नहीं करेगा, वो नहीं पूछेगा कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। थिंक अबाउट दिस। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ मेरे ख्याल से, तो अगर कोई कन्विंस नहीं है तो इसके बाद हो जाएगा। एक छोटे बच्चे को जब पूछा जाता है, क्लास में तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो, 10 लोगों ने अगर बोला डॉक्टर इंजीनियर एस्ट्रोनॉट पायलट, तो अगर इसको क्रिकेटर बनना है ना तो ये क्रिकेटर नहीं बोलेगा, he will say doctor, engineer, pilot, something like that, because he will think that is what you're supposed to say, because वरना पूरी क्लास हंसेगी। और जब 9th 10th क्लास में आ जाता है वो, और तब भी शायद उसने 1-2 बारी बोल दिया कि उसे डॉक्टर इंजीनियर बनना है, वो अंदर से फिर भी क्रिकेटर ही बनना चाहता है। जब 9th 10th में वो लोगों को पढ़ते हुए देखेगा ना पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम्स के लिए, तब उसे लगेगा कि शायद मुझे भी इंजीनियरिंग कर लेनी चाहिए, शायद मुझे भी डॉक्टर कर लेना चाहिए, एंड तब वो साइंस ले लेता है, नॉन मेडिकल ले लेता है, व्हाटएवर। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो श्योर, इफ यू वांट टू रूइन योर लाइफ, बिलीव दैट एजुकेशन सिस्टम इज मेड फॉर योर बेनिफिट, अदरवाइज assume that is trying to sabotage you, because it is. Number 3 is believe in God, respect God, fear God. Number 4 is stay uncomfortable. Comfort is the killer of dreams. Regularly make sure कि तुम ऐसी चीजें सीख कर रहे हो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल बनाएंगी, ताकि तुम कॉन्फिडेंट हो सको। जब तुम अनकंफर्टेबल होने में कंफर्टेबल हो जाते हो ना, that's when you are a confident person. Number 5, work out every single day and stay in shape. Don't be a bodybuilder जो आधे साल तो मोटे रहते हैं, आधे साल उनकी बॉडी बन जाती है। Stay in shape all the time. अच्छा खाना खाओ, अच्छी डाइट खाओ, and that's how you live a full, healthy, successful and happy life, in my opinion. This is what I'm going to do. This is what I'm doing already. Hopefully you got some value out of that. I'm building a community of high value men, और मैंने want to become high value. If you think you're one of them, subscribe to my channel right now ताकि मेरी वीडियोस आपको और आसानी से ढूंढ पाए, and I can help you in your own self improvement journey every Monday and Thursday. And I will see you in the next video. Bye.